कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती नमो नमः भक्तावीनापराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम् स्मरामि राधां मधुरास्मितास्त्रं वदामि राधां करुणावदां श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वतमति प्रपाद नित्य लीला प्रविष्टम कृष्णोपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला गोस्वामी भक्ति सीता कृष्ण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखाए। आज अति सुंदर पवित्र दिवस है। भक्तिमोहन ठाकुर जी कीर्तन में लिख रहे हैं जिदिन गृह भजन देखी गृह ते गुरु को भाई चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना। जिस दिन गृह में संत महात्मा प्रभु गुरु वैष्णव पधारते और हरि कथा होती वो गृह विरणी वो गृह साक्षात वृंदावन साक्षात गंगा देवी उस स्थल पर आकर के कल कल रूप से प्रभावित होती है। I can't hold everything. समस्त Can't जीवों के hold too many things. पाप दूर करने वाले गंगा देवी वहीं पर प्रकट हो गया। चरण सिंधु देखिए गंगा सुखना। जिनके चरण कमल के दर्शन करने के लिए गंगा आदि बड़े बड़े देवियां भी ललायित रहती हैं। जहाँ पर हरि कथा होती है वहाँ पर साक्षात भगवान और भगवान के जितने परिकर और विशेष करके आज एकादशी तिथि भक्ति जनन जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर। भक्तिनाथ ठाकुर इस कीर्तन में भी सुंदर में वर्णन कर रहे हैं। एकादशी तिथि भक्ति जनन जैसे माँ संतान को जैसे प्रसव कर उसी प्रकार एकादशी तिथि पालन करते हैं। हम हृदय में शुद्ध भक्ति देवी प्रकट होती है। इसलिए आप इसे इसलिए एकादशी की पालन करना अतीव जरूरी है। हरिभक्ति विलास में एकादशी पालन की विधि बताई। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश दुर्वासा की कथा प्रसंग ही एकादशी के लिए। इसलिए वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र ही एकादशी की महत्व है। अभी सब लोग करते हो, यदि कहीं नहीं करते हो तो अवश्य एकादशी पालन करें। 64 प्रकार की भक्ति के अंग में एकादशी पालन के विशेष रूप में हमारे आचार्य पढ़ते हैं।
कहते महाराज एकादशी कर नहीं पाए। अरे मर जाओ तो एकादशी कहीं मरे तो अच्छा ही तो है। एकादशी में मृत्यु होना ये बहुत सौभाग्य की बात है ना। बोले एकादशी के बनने से साक्षात में भगवत धाम प्राप्त हो जाए। मरोगे नहीं, इतना सहज नहीं है। एक दिन खाने से थोड़ी मरता है। शादी के समय जो है जब तक वही करना कि वो नहीं हो जाए, I didn't know it. दान जब तक नहीं हो जाए, कन्यादान जब तक नहीं हो तब तक भी वो जल ग्रहण में नहीं करते। पता नहीं आप लोग के देश के लिए कैसे विधान है। जब तक कन्यादान नहीं हो जाए, शास्त्र में लिखा है जितने प्रकार के दान है कन्यादान सब श्रेष्ठ दान है। To give a daughter in a hand in marriage to another family is the greatest form of charity, and nobody dies from that. So performing Ekadasi, you will not die by performing Ekadasi by not eating on that day or not taking grains. Then we should perform Ekadasi. We should not eat grains on this day. There are 5 types of grains: gehu, dal, sarso, jaw, just like barley, wheat, rice, sesame seeds. Should not take. समस्त पापों के जो है बीज जो है वो ये समस्त 5 प्रकार के अनाज व शस्य में जो है। In these 5 types of grains, there is sins. Just like killing the cow, killing Brahman, killing one's mother. They all reside in the grain. Yudhishthira Maharaj, he asked this question and showed the glories of Ekadashi. Gurudev has also elaborated on this. Krishna Katha. हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से उत्साह के साथ सर्वत्र मनाया। We celebrated Krishna Janmashtami very nicely just very recently. 10-12 दिन के बाद फिर कृष्ण के शक्ति सर्पणी राहे की After 10-11 days, we will also celebrate Radhini Shakti Swarup Srimati Radhika Radhashtami. If you believe or not believe, if you don't observe any other festival, you must observe Radhashtami. Krishna is crooked, but Srimati Radharani is very simple. She's very compassionate. Krishna, you have to. Radhaji doesn't want to give any trouble to anyone. She appeared in Brahma Muhurt. In the Brahmanda Puran, it's very beautifully elaborated. प्रकट लीला की कथा, जन्म लीला की कथा व्यासदेव ने वर्णन किया। Vyasadeva is written इसी कल्प में राधा जी in different kalpas. अग्नि से प्रकट हुई। She appeared in fire. भूता कहा जाता है, अग्नि से प्रकट हुई। इसी कल्प में In राधा जी another कमल से kalpa, प्रकट हुई। she appeared in a lotus. कमल जी कहा जाता है। इसी कल्प में In other राधा जी जो है kalpa, she appeared बरसाना में in Barsana, विश्वभानु खोल Vrishabhanu. हम लोग बरसाना परिक्रमा जाते हैं। किसी कल्प में Another राधा जी kalpa, जो अंडे से प्रकट हुई। she appeared from an egg. किसी कल्प में Another राधा जी kalpa, राविल में प्रकट हुई। she appeared in Raval. अजनी संभवा श्रीमती राधिका। किसी कल्प में श्रीमती राधिका साक्षात जो है In another kalpa, विश्वभानु महाराज की पत्नी कृतिका देवी की कीर्तिका सुंदर के गर्भ से Kritika, प्रभुत्व the लीला wife में of Vishwanu जैसे Maharaj. कृष्ण अजन्मा होकर के भी माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लियो, उसी प्रकार
राधा जी भी कल्प भेद से विभिन्न कल्पों में in shape he is in माँ कृतिका different सुंदर के kalpas, बहुत and सुंदर सुंदर सब कथाएं हैं in पुराण one kalpa she appeared from the womb of Kirtika Sundari. अत्यंत सुंदर रोचक करके Vyasadeva is written very राधा जी beautifully, राधा की कथा जो बनने very beautifully by कहीं भी Srimati राधा की Radhika. ऐश्वर्य भी प्रकाश करते जैसे कृष्ण की अनेक Closer. ऐश्वर्य कोई लीलाएं हैं उसी प्रकार राधा जी के भी अनेक प्रकार जो है ऐश्वर्यमय लीला है। राधा जी किसी प्रकार से कम नहीं है। यदि देखा जाए तो कृष्ण से Radhaji knows less than Krishna. She's 2 fingers bigger, more prominent than Krishna. अभी कृष्ण की कथा चले सब लोग आविष्ट होंगे शायद कृष्ण में कृष्ण की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। Many people are focused in Krishna. The Vedas say Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He's Bhagavan, whose glories are sung. By the demigods, highly elevated personalities, elaborately sing about his glories. उसी प्रकार कृष्ण के बहुत स्तुति है सामवेद के द्वारा ही जिनकी स्तुति ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल दर्शन करने के लिए लड़ाई लड़ाते हैं ध्यानस्थ होते हैं अपने सुंदर निर्मल हृदय में जिनकी प्रकट करने के लिए प्रयास करते रहते हैं कभी कृष्ण उनकी हृदय कमल में अपने चरण कमल के कभी प्रकट Many endeavor to have Shri Krishna enter their heart. Rupa Goswami has written Krishna Deva Bhavantam Bande. Rupa Goswami Pada has written Brahma, Shiva, and all the great personalities, not ordinary person, Mahapurushas, great elevated personalities. They meditate to achieve the lotus feet. ज्ञानियों के लिए ब्रह्म और जोगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए साक्षात भगवान। For the Paramatma and the Bhaktas, for the Bhagavan. For the Gyanis, Brahman. For the yogis, it's the Paramatma, and the Bhaktas meditate on the Supreme Personality of Godhead. Krishna has performed many pastimes in Braj. His pastimes are very sweet. Everything is very sweet, like sugar candy. It's all made from sweetness. If you start from the feet or if you start from the head. उसी प्रकार कृष्ण की सारी लीलाएं सारी कथाएं जो है अमृत
Because if it's made of sweetness, the whole piece is sweet, everything. Govinda's pastimes are all sweet. The pastimes of Raj. In Mathura, Dwarka, they are all very sweet. Still, there's some speciality in Krishna's pastimes. It's the Gaudiya speciality of thinking. There are three abodes: Dwarka, Mathura, and Vrindavana. And he is present in those abodes. Dwarka is known as Purna, complete. Mathura is known as more complete. And Vrindavana is the most complete abode. Our Acharyas has written according to these three different abodes. After Putana, he manifested pastimes, killing one demon after another, like Agasur. He killed in Braj. He played very nicely with his friends, his sakas. And when the child grows up, he wants to spend some time with his friends. And once he is separated, he says, I want to sleep separately. Because if he sleeps, if the child sleeps with his mother, he won't be able to play with his computer games. So the son or the daughter, they ask, oh, I want to have another room for myself to study. So he makes this excuse. Very clever, somehow or another. He knows how to manipulate the mother. He says, oh, I have so much homework after school, I need my space to study, my own place. It's not true, he's going to play his video game. In this way, Krishna, he plays with his friends. And when he's a little bit older, he goes to cow herding. A little bit older still, he plays. He performs loving pastimes with the gopis. Shukadeva Gosvami spoken. Rasapancha. The 5 parts of the 10th canto. भागवत में तो है ही, और व्यासदेव जी ने और दूसरी पुराणों में भी वर्णन किया कर दिया। इसमें बहुत सुंदर लीला है। चलो वृंदावन लीला के पश्चात स्वयं कृष्ण
फिर नारद ऋषि के द्वारा after Vrindavan pastimes. क्योंकि जब गोपी क्या बोले वृंदावन की लीला समाप्त हो गया, नारद ऋषि ब्रज में पधारे और कृष्ण की याद दिलाया प्रभु Narada came to Braj यही ब्रज की प्रेम प्रदान करना and reminded him, you didn't only come to perform Braja Leela, आगे आपको लीला की भी प्रकट करना है। वृंदावन you have to perform your other Leelas मथुरा के पश्चात also. ताई का लीला जब तक प्रकट है। You have to go to Mathura and also to Dwarka. आप नहीं है मथुरा की लीला भी आपको You have many devotees, not only in Vrindavana but also in Mathura and Dwarka, like Devaki, Vasudeva, Ugrasena and others. They are suffering so much in the hands of Kamsa. Please deliver them. जगत में आप प्रकट हुए हैं किस परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां Why have you appeared in this world? ये भी तो आपको लीला करना है, उसुर मारण लीला। You have to kill the और demons, दूसरी जो है वर्णाश्रम धर्म आदि पुनः स्थापन करना, ये तो establish Varnashram Dharma. नारद ऋषि इसी प्रकार भगवान कृष्ण के निकट आकर के कुछ In this way, Narada Muni spoke to Krishna, विचार करने वाली बात ही सकती है। and the Lord was thinking, yes, this is true. ये मेरा उद्देश्य I did not come only है। to engage in loving pastimes with the Brajavasis. इसलिए संयोग मां के द्वारा प्रेरित होकर के अक्रूर जी ब्रज में पधारे, क्योंकि कंस एक एक करके In this way, Akrura मारने के लिए फिर जो ब्रज में आ गए वो ब्रज में वापस ब्रज से वापस पुतना से लेकर के अगासुर बकासुर जितने भी बड़े बड़े असुर आ गए थे, कृष्ण सभी असुरों के क्या की सब अनंतर कंस अपने मंत्रियों के साथ विचार किया कि सांप जब तक गड्ढे में रहेगा, गर्त में रहेगा, उसके मरना संभव नहीं। सांप यदि गड्ढे में रहे ना, उसे कैसे मारेगा? Kamsa thought, as long as this snake resides in the hole, it's not possible to kill him. डर से आएगा। तो सांप के गर्त से गड्ढा से The snake is not going to come out of its hole. तो गड्ढे से निकालने की उपाय क्या है? So we need to find a way to get the snake out of the hole. गरम पानी डालना पड़ेगा, ठंडी पानी जब होगी और आराम से। गड्ढे सांप जो है गरम पानी को सहन नहीं कर सकता, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। इसमें आई So if one person says you have to put water in the hole, the Gurudev said no, you have to put hot water in the hole. गरम थोड़ा सा हल्का गरम पानी डाल दो, वो सांप अपने आप तिल करते ही वो बाहर आ जाएगा। ये सबसे बढ़िया है। चलो मैं जिस कथा को कही जा रहा, इसलिए कंस के जितने अनुचर जो है उनके जितने भी मंत्री लोग होते ना, Kamsa's ministers, ये कंस एक काम करो, कृष्ण प्रोग्राम की his advisors, ब्रज से बाहर लेकर they advise और हम लोग सब पहले से प्लान बना लेंगे how to take Krishna and Balaram out of Braj. भाई को जो है हम लोग कुटाई कर So when they come out, we will surround them and beat them. सब ब्रज को जो है हम मार देंगे, ना रहे बांस और ना बजे, We will kill them, किसी प्रकार से कृष्ण प्रोग्राम and then we will kill all the Brajavasis. Once we kill Krishna and Balaram, Braj is like that snake hole for the demons. कंस तो एक बार अपने परीक्षा भी कर लिया था, जब मैं संग जाता हूँ कृष्ण भी मैं मार डालता हूँ, क्योंकि कृष्ण एक बार कंस ब्रज में आ गया था, केवल मथुरा के बड़ा जो है ना सीमा को पार करके वृंदावन की सीमा में पैर रखने पार रख दिया, इतने समय जोगमाया ने किया कि उसे पकड़ लिया और पकड़ करके एक Yogamaya Purnamasi caught them डुबा और डुबा देने के साथ ही साथ वो बिल्कुल and immersed him, comes underwater. बाल सफेद हो गए, That very moment comes पार्लर काम नहीं करती, she transformed him into another lady. जब ये बिल्कुल दांत भी नहीं है, चला गई, चली गई, This old lady had no flesh, no teeth.
cheeks had gone inside. She was very thin and lean. There was no flash to go to the beauty parlor. Very old lady. Long nose. And then he came in front of the gopis, and they said to the old lady, "Where have you come from? What is your village? Who are your relatives?" And she could not answer, so all the gopis beat the old lady so much. The gopis were nearly about to kill her, but Yogamaya arranged so the gopis would not killed her. So Yogamaya again immersed her in the pond, and then she turned again in Kamsa form. He was back in Mathura. He went back to Mathura so fast, as like a dog. I remember one past time, Gurudeva, we were staying in Rupa Sanatana. By Gurudeva's Bhajan Kutir. It was night time, and the dogs were making so much noise, again and again disturbing Gurudeva's sleep. So at that time, Madhava Maharaj there's a way to get rid of the dog. Madhava Maharaj slowly approached the dog and sprayed this on the back of the dog. And Gurudeva said, "Where are all the dogs? Have they gone? It's all quiet." And Madhava Maharaj said, "I gave them some mantra, and they all went away." In the same way, Kamsa ran from the border Vrindavan to Mathura, and he never returned back to Vrindavan again. Why did he not come himself? Kamsa was not an ordinary person. He was very strong. Kamsa knew. He knew that that was some magic in the dust of Braj. For this reason, he sent his representatives, his demonic associates to kill Krishna. So the plan was to bring Krishna and Balaram out of Vrindavan, but with some trickery. He sent Akrura. He had some friendly relationships with the Brajavasis.
रथ लेकर के मथुरा से Kuruva. वृंदावन पधारे। फिर नंद महाराज के साथ सारे रात कृष्ण बलराम के ब्रज So he took his chariot and he spent the day in Vrindavan with Nanda Maharaj. और कृष्ण बलराम भी जो अपने रथ पर बैठे करके मथुरा और मथुरा में स्वयं कृष्ण The next day, देखते देखते ही चांगुर मुष्टि he brought Krishna and Balaram to Mathura. सदियों के उन्होंने अंत में कृष्ण और बलराम कंस के हत्या के पश्चात फिर कृष्ण ने देवकी वसु के उग्रसेन के जो है कारागार से जो है And he killed Kamsa मुक्त कराया और very फिर easily. देवकी वसुदेव की भी And then released Devaki and Vasudeva राज सिंहासन जो है अपरूप क्या बोले and Ugrasen. And he returned the throne back to Ugrasen. Thereafter, Devaki and Vasudeva sent the saint Krishna Balaram to the ashram of Sandipadi Muni to study. अपने दो बेटियों की विधवा दो पत्नी के दोनों बेटियों की कथा सुन करके अर्थात कंस के Jarasandha. क्या कहना वस्ती और प्राप्ति उल्टी सीधी कथा करके अपने पिता जरासंधा के बिल्कुल कान भर दिया The wives of Kamsa, कान भरने लोग because Krishna had killed them, their husband. जरासंधा बहुत क्रोधित हुए अपने विधवा दोनों बेटियों को देख करके So the father, he made many false allegations against Krishna. और उन्होंने कितने अक्षुणी सेना लेकर के Jarasandha sent many formations of army to attack Mathura. 17 times he sent many armies. On the 18th attack, Krishna collected all the residents of Mathura and took them to Dwarka. Righteously married 16,800 princes. And also he had 10 sons and one daughter of one of each those wives. You cannot imagine. And he had such a great vast kingdom. From each princess he had 11 children. You know how difficult it is, so difficult to have one child, and he had so many children from each of his wives. और ना जाने कितने भी उनके जो है नाती नातनी करते हैं ना जाने कैसे विशाल राज्य कृष्ण पर आचार्य के बाद भी कहते हैं वैकुंठाल जनितो बड़ा दारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सदोर आत्मजा प्रिता वैकुंठ से भी श्रेष्ठ नारे तारिकापुरी का होगा जहाँ पर स्वयं भगवान Higher than Vaikuntha is Dwarka, अनेक प्रकार के where the Lord resides with his wives and performs his pastimes. उसी प्रकार कृष्ण अपने पुत्री पुत्र पन्ना आदि के साथ with his wives and children. छोटा सी कथा मैं बताता एक कथा जो दादी के कथा एक बार कृष्ण सत्यभामा के Once
Satyabhama met with Krishna. She is the manifestation of Srimati Radhika. Not straightforward, but crooked. कृष्ण जाकर के बोले सत्यभामा है बहुत सुंदर है पति पत्नी जैसे मिलते हैं संसारिक लोगों की भांति भगवान प्रेम आस्वादन करने लगे प्रेम से बात करते करते So they meet like an ordinary couple. They speak sweetly to each other. अपने प्रशंसा सुनने के लिए कृष्ण की कैसे तो दीदी आप बताइए मुझे आपको कैसे लगा Satyabhama spoke to Sri Krishna. कहाँ जा रही सुना मेरी कथा सत्यभामा कहने लगी पतिदेव मुझे आपको कैसे लगे कृष्ण ने हंस पड़ी Listen Harikatha. संसार की बात है ना हंसते चलते रहो तो कृष्ण ने इतना ही कहा दिया नमक जैसे कैसे लगता है नमक जैसे नमक अच्छा है क्या थोड़ी Why do I appear to you? And he said, you appear to me as like salt. And she said, how can I appear like salt? Krishna, he wanted to eat some fruit. So Satyabhama was preparing some fruit, and accidentally she cut her finger. And he asked Satyabhama to cook for him, but because of the cut finger, she could not put the finger on the salt. Because if you put your cutted finger on the salt, it will burn. So he said to her, you are like salt to me because sometimes you give me such a burning sensation. So he said, you are like salt. And now she is a man. And Krishna is thinking, how can I break this man? So 2 days passed without them speaking to each other. 1 or 2 days. They were upset with each other. So after that, naturally, some event takes place, and they reconcile the man. Things became a little bit better after 2 or 3 days. So Krishna performed one pastime. He said, let's go and take a picnic. Deliberately. Krishna himself, with his own hands, he made the preparations. They were sitting together to take prasad. It was afternoon. 12 o'clock right now. We are hungry. So Krishna was encouraging Satyabhama to start eat. This is the love and affection between husband and wife. This is not Ayodhya. In Vaikuntha and Ayodhya, there are different rules there. In Dwarka, there are some rules, but it is relaxed. So Krishna said to Satyabhama, don't worry, you start eating first. So she said, okay, today I can start eating before Krishna. She put sabji in her mouth, and there was no salt.
Krishna, knowingly, he didn't put any salt on the subjects. Satyabhama thought, she chastised him. She said, "Hey, you." She chastised the maid, but Krishna prepared the maid to so she would not say anything. And there were any sugar on the sweets, any salt on the subjects. And Krishna said to Satyabhama, why are you making so much fuss? This maid does not know how to cook. She did not put any salt on the preparations. And Krishna said, who made these preparations? She asked, and Krishna said, I made these preparations. And she said, why you didn't put any salt? Because previously I said you are like salt. So without salt, nothing is tasty. So today I am showing you by this illustration that any preparation without salt is not tasteful. I will speak about one pastime in Vrindavan, then I will stop. The place of Krishna's pastimes. Krishna was glorifying himself at this place in Vrindavan. So he is glorifying himself. So Srimati Radhika said, do you know how to swim? He said, of course I know how to swim. So they both went to the Radha Kunda and set up a challenge to know who would reach the other side first. A swim challenge. All the gopis were in the Radharani's side. They were clapping, and Radhaji swam. She was swimming very fast, and Krishna was right behind her. Krishna's face became very sulky when he saw that Radhaji, she was beating him. She was ahead of him. There was just a little left to reach the other side, and Radharani, she drowned in the water. So Krishna, he reached the other side before. Radhaji lost this race, and the Sakyas, Lalita and Vishaka, they said, why did you stop just before you reached the other side? Why did you let Krishna win? And Radha said, what can I say? Govinda is my life and soul. Today, I let him win. Deliberately, I failed to beat Krishna in the race, so he would not become sad. If you sit on the banks of Radha Kunda, so many pastimes will manifest in your heart. So nice at Radha Kunda, so beautiful.
in the gentle waves, overcoming each other on the bank. And if one drop comes in one's body, their life will be successful.